क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अब, और कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से। सो लेट्स गो। ये लोग क्या कर रहे हैं? Oh my God. A few moments later. Everything is written in Gujarati, by the way. Just crossed Surat. And this is the toll plaza of Surat, I guess. High time, I have to go ahead and make a refuel. Take a pit stop. फुल टैंक कर देना भैया, फुल टैंक। चला फुल टैंक, फुल टैंक होल होल दिखाओ। 1 मिनट। हाँ बस ओके करो। थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ करो, डालो डालो। बस 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 बंद कर दो, बंद कर दो। कितना हुआ? 618। एक सेकंड, वो गर्म होता है। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली। कब पहुँचोगे दिल्ली? हाँ कल सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे।
कितना स्पीड में भगती है भैया? हाँ कितना स्पीड चलती है? 220 220। हाँ और ये एवरेज की लिया भाई, हाँ जी? एवरेज कितनी आती है एवरेज? एवरेज हाँ अभी देख के बताता हूँ, रुको। 18 18 की एवरेज आती है। 18 से 20 के बीच में। ये गाड़ी का नाम क्या? बेनेली। ऐसा होता है। This is nice. It's like a cable bridge. From what I know is that it was written as Narmada Bridge earlier. And is this Narmada River or what? Probably. Lovely. Okay guys, so right now I am here in this restaurant and I am really tired. It's quite hot in fact, so I have taken off my jacket and my gloves for some time. Probably I'll start wearing it after some time when it is a little darker or something, because right now I am getting exhausted because of the heat. प्लस द बाइक का हीट भी कुछ ज़्यादा ही है, तो इसी चक्कर में एज ऑफ नाउ आई एम अराउंड अबाउट 50 kilometers फ्रॉम वडोदरा एंड another 900 kilometers to go for Delhi. So I have taken a shorter route this time and it is like state highway.
I am right now in Rajasthan, and last 50-60 kilometers, really bad road so far. And this is like Gujarat, around about 30 kilometers of Gujarat and 30 odd kilometers of Rajasthan that has been bad. Potholes कहीं से भी आ रहे हैं और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट. So there is a little bit of a delay and I took a small break as well. अभी चाय पी and I'll be in Udaipur by around about I guess 11:30 or so. Let's see how things go. ये था नज़ारा बाहर का एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. अब हुआ क्या कि कल रात को बहुत बुरी तरह वाली बारिश होने लगी रास्ते में एंड मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही थी बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड एवरीथिंग. बिकॉज अभी उदयपुर जब क्रॉस कर रहा था तो हद से ज़्यादा धूल मिट्टी रोड पे थी, तो आई वॉज एक्चुअली नॉट एबल टू बेयर इट एनी मोर. तो इसी चक्कर में ऊपर से नींद भी आने लगी, तो मैंने इमीडिएटली एक होटल है रास्ते में आराम करके, होटल आराम, तो मैं आई जस्ट वेंट इन एंड आई टुक द रूम राइट अवे एंड इट कॉस्ट मी लाइक अराउंड $600 फॉर द रूम. क्विकली आई जस्ट केम, स्लेप्ट ऑफ एंड अब 11:30 बज रहे हैं. अभी नहा धो के तैयार हुआ. 10 घंटे का राइड और बाकी है. सो let me show you further.